cases will be moved to the civilian justice system. We're not sitting around waiting for anything to occur. The teams are in active discussions right now. This is all hands on deck. It's a move that follows the interim recommendations from former Supreme Court Justice Louise Arbour. Recommendations Arbour laid out in her letter last month to the former Minister of Defense. So what does this tell us, if anything, about how Minister Anand is in her new role? It's Thursday, and I'm here with that issue. Chantal Hébert, Andrew Coyne, and Althea Rush. Good to see everybody. Chantal, I'll start with you. How should we interpret what? Conservative leadership candidate Erin O'Toole thinks he knows what Canadians want. An O'Toole government will modernize and reform the CBC. We will end funding for CBC Digital, and we will cut CBC English TV budget by 50%. Screw you, Erin! Now, if you're watching this, I assume you're either a fan of the CBC or you're stuck in a hospital waiting room. So thanks for watching, and I hope it's not infected. Erin wants to get rid of the CBC, but why? The world of broadcast media has changed dramatically, but our public broadcaster is stuck in the past. Oh, look, a guy who won't march in pride parades is saying the CBC is out of touch. Canadians are connected to the world with the swipe of their finger. So, Erin, you're saying we should replace the CBC with Tinder? Could it be that some conservatives are afraid of the CBC? Look what happened to this CBC reporter when he tried to cover the Ontario PC party this weekend. Excuse me. Okay, go. Sorry, I'm on. Excuse me. Sorry. Sorry, Vashi, there's a security trying to stop us from doing this report kind of thing. Yeah, so the Ontario PC party is trying to, has sent people out here to try to chase this away. A recent poll by Nanos Research found that fewer than 1 in 5 Canadians want CBC funding decreased, and 46% want funding increased. In comparison, during the last leadership campaign, Erin O'Toole came in third behind Maxime Bernier and Andrew Scheer. Maybe Erin is just jealous of the CBC because it's polling better than he is. Erin, people love the CBC, but don't take my word for it. Tell them, Casey. Listen up, Erin, you tool! The CBC costs about $34 per person a year. In comparison, BBC funding is $100 per person per year. So that's a deal. Maybe politicians will stop tracking how much money it costs if we rename the CBC Bombardier and change from New Canada to SNC Leveling, you bunch of prick. Okay, calm down, Genji. Calm down. Chill out. So boring. Calls. What? Having to budget an additional $800 to $1,000 for all of us, get a PCR test, that's a significant cost and certainly is giving us pause for thought. Families, the travel industry, and the Canadian Chamber of Commerce all calling on Ottawa to drop mandatory PCR tests for Canadians traveling abroad. The burdensome cost of a molecular test can add over $200 Canadian per person. For a family of 4, this adds an additional $800 for a trip. As it stands, Canadian travelers are required to provide a recent negative PCR test to return from abroad. Those opposed to the testing say it leaves middle-class Canadian families with a hefty, unnecessary bill. But many health officials say the PCR test is another layer of protection, especially from countries where the vaccination rates are lower than Canada's. BD saying we're falling behind other close neighbors. As of Monday, the United States is changing the rules for admission into the United States by land. They will not be requiring such a test for anybody arriving by land, nor do they require one for people coming by air. Industry leaders say Canada's measures will soon start costing the travel and tourism industry business it's still trying to get back. The travel and tourism industry is bracing for more cancellations. I'm already seeing cancellation after cancellation. Transport Canada telling City News.
Our phased approach to easing border measures is informed by the available data and scientific evidence, including the vaccination rate of Canadians and the improving epidemiological situation. The Chamber of Commerce also wants to see restrictions eased on traveling children who are too young for the shot. When they come back to Canada, unvaccinated minors traveling with their fully vaccinated parents are also unable to attend school, daycare, or camp for 14 days, placing a further burden on the family to stay home. In Ottawa, Nigel Newlove, City News. Oh God, what a burden staying home. God, Before government dropping its fall mini budget with promises of spending on highways and other infrastructure projects, there's also incentive to enjoy some time out without. Are you as good at things as you think you are? How good are you at managing money? What about reading people's emotions? How healthy are you compared to other people you know? Are you better than average at grammar? No. Knowing how competent we are and how our skills stack up against other people's is more than a self-esteem I boost. am fucking useless. I'm It basically helps us kept on a figure out fucking when boat. we can forge ahead on our own decisions and instincts, and when we need instead to seek out advice. But psychological research suggests that we're not very good at evaluating ourselves accurately. In fact, we frequently overestimate our own abilities. Researchers have a name for this phenomenon, the Dunning-Kruger effect. This effect explains why more than 100 studies have shown that people display illusory superiority. We judge ourselves as better than others to a degree that violates the laws of math. When software engineers at two companies were asked to rate their performance, 32% of the engineers at one company and 42% at the other put themselves in the top 5%. In another study, 88% of American drivers described themselves as having above average driving skills. These aren't isolated findings. On average, people tend to rate themselves better than most in disciplines ranging from health, leadership skills, ethics, and beyond. What's particularly interesting is that those with the least ability are often the most likely to overrate their skills to the greatest extent. People measurably poor at logical reasoning, grammar, financial knowledge, math, emotional intelligence, running medical lab tests, and chess all tend to rate their expertise almost as favorably as actual experts do. So who's most vulnerable to this delusion? Sadly, all of us, because we all have pockets of incompetence we don't recognize. But why? When psychologists Dunning and Kruger first described the effect in 1999, they argued that people lacking knowledge and skill in particular areas suffer a double curse. First, they make mistakes and reach poor decisions. But second, those same knowledge gaps also prevent them from catching their errors. In other words, poor performers lack the very expertise needed to recognize how badly they're doing. For example, when the researchers studied participants in a college debate tournament,
The bottom 25% of teams in preliminary rounds lost nearly 4 out of every 5 matches. But they thought they were winning almost 60%. Without a strong grasp of the rules of debate, the students simply couldn't recognize when or how often their arguments broke down. The Dunning-Kruger effect isn't a question of ego blinding us to our weaknesses. People usually do admit their deficits once they can spot them. In one study, students who had initially done badly on a logic quiz and then took a mini course on logic were quite willing to label their original performances as awful. That may be why people with a moderate amount of experience or expertise often have less confidence in their abilities. They know enough to know that there's a lot they don't know. Meanwhile, experts tend to be aware of just how knowledgeable they are, but they often make a different mistake. They assume that everyone else is knowledgeable too. The result is that people, whether they're inept or highly skilled, are often caught in a bubble of inaccurate self-perception. When they're unskilled, they can't see their own faults. When they're exceptionally competent, they don't perceive how unusual their abilities are. So if the Dunning-Kruger effect is invisible to those experiencing it, what can you do to find out how good you actually are at various things? First, ask for feedback from other people and consider it, even if it's hard to hear. Second, and more important, keep learning. The more knowledgeable we become, the less likely we are to have invisible holes in our competence. Perhaps it all boils down to that old proverb. When arguing with a fool, first make sure the other person isn't doing the same thing. Did you enjoy this lesson? If so, please consider supporting our nonprofit mission by visiting patreon.com/TEDEd. Damn it. Okay.
What? Yeah. What? Yeah. What? What are you doing? I'm looking for my shit. Your shit. Crawl in your bum, silly. Thanks. What? You know right what? Yeah, I can hear that. So stupid. Is porn in peril? I'm here with Brad Hunter, aka the Sultan of Slays, aka porn expert. Brad, more than a dozen states in the U.S. want to declare pornography a public health crisis. What's up with this? What's going on is that they want to put blocks. They want to ensure that kids don't get access to the veritable smorgasbord of smut that's available out there. And I'm certain that everybody would agree that there's no shortage of it. So, but they think that it's really screwing them up down the road. Yeah, and this isn't like, out of left field. It's actually Republican senators, one of which is from Arizona, that actually wants to put the brakes on this. Sylvia Allen calls it an epidemic in our society that makes a statement we have a problem. It's a problem, but they can really wind things up too. It's an area where the far left and far right meet, and that's important because they both hate it for different reasons. One in a very Puritan way, and the other, for woke reasons. Okay, Brad, is there a problem if people want to stay at home and just do the 5-knuckle shuffle every Friday night? No, there's no problem with that, but don't spend 12 hours doing the 5-knuckle shuffle, right? I mean, that's one of the things. I mean, it's probably cut down procreation. It's probably maybe lessen sexual assaults. I mean, most of these guys are too lazy to get up away from their computer. I mean, there's a myriad of statistics. 40% of Japanese, adult Japanese, are still virgins. Millennials are having 2.5 times less sex than people our age. So what are they doing? It's a computer. It's an internet problem. As much as a porn problem, and porn's in peril anyways for none of this because everybody rips it off online, and so it's harder and harder for the good lords of sleaze to make a buck. Get off. Yeah, exactly. All right, let us know what you think down below. Is porn in peril? Till next time, Brad, where will I find you? I gotta go, and thanks for watching. I know.
अरे जल्दी नाश्ता ला यार, लेट हो रहा है, देख लो 10 बजने वाले हैं। लाती हूँ। ये आपकी चाय। बस आता ही होगा अभी। हेलो भैया, हेलो भाभी। हेलो। ये तो राहुल। अरे राहुल, ये भैया। तुम कल रात को लेट क्यों आए? अरे भैया वो एग्जाम आने वाले हैं ना, और उससे पहले जो छुट्टियां मिलती है, बस वही एंजॉय कर रहा था। आप भी ना, कितना पड़ेगा? आप भी इसके पीछे ही पड़े रहते हैं। चलो, नहीं पड़ेगा। थोड़ा एंजॉयमेंट तो बनता है। चाय बहुत मीठी है। ऐसा करो, मेरा बैग लेकर आओ। मैं अभी लेके आती हूँ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये ले छोटो। लेके आपका बैग। ऑफिस फोन पे कॉल कर देना। बाय भैया। बाय। आप कौन? मैं इसका रीडिंग करने गया था। अच्छा, तो ले लिया? जी। ठीक है, लेकिन तुम डरे हुए क्यों? नहीं, कुछ नहीं। चल। जी आप कौन? जी मैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन? अभी 2 दिन पहले तो आया था इलेक्ट्रीशियन फिटिंग देने के लिए। 2 दिन पहले आया था। ऐसे कैसे हो सकता है? इस एरिया का तो मैं हूँ रीडिंग लेने वाला। चलो ऑटो, मुझे रीडिंग लेना है। अगर ये असली इलेक्ट्रीशियन है तो फिर वो कौन था? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। भाभी मुझसे छुपा रही है। जानो तो मैं कितनी बार बोला है, थोड़ा जल्दी आया करो ना। क्या करूं मैं? ऑफिस के टाइम से बिजी रहता हूँ ना। वैसे जब भी समय मिलता है तो आ ही जाता हूँ। तो बहुत लेट आते हो। अच्छा। वैसे तुम्हारी स्पीड हमेशा स्लो ही रहेगी क्या जानो?
हेलो, और मैं अभी तूने मेरी स्पीड देखी कहा है? Ah, look at you! You're just like full of it today. Welcome to my life. Sorry. भाभी, ये सब क्या चल रहा है? आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? भैया आपसे इतने प्यार करते हैं और भैया के साथ धोखा। अभी मैं भैया को सब कुछ सच बताता हूँ। देखो देखो राहुल, मैं ये सब करना नहीं चाहती हूँ। मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता है, पर तुम्हें पता है ना, एक औरत का दिल प्यार से नहीं भरता, उसके लिए और भी कुछ चाहिए होता है। पर तुम्हारे भैया के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुम समझ सकते हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो भैया ये सब किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए तो कर रहे हैं, और आप उनको धोखा दे रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? अभी मैं उनको सब कुछ फोन पे सच्चाई बताता हूँ। नहीं, कॉल मत करना। देखो, नहीं, अपने भैया को कॉल मत करना। देखो प्लीज, फोन मत करना। प्लीज अपने भैया को फोन मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भैया तुम्हारी बातों पे भरोसा करेंगे? तुम्हें पता है, वो केवल मेरी ही सुनते हैं और केवल मेरी ही बताई बातों को सच मानते हैं। समझे तुम? तो देख लो, तुम्हें बताना है या नहीं बताना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अबे कमीने, तो फिर से आ गया। तुझे मैंने मना किया था ना, तो फिर से आ गया। राहुल, ये कहीं नहीं जाएगा। जब इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तू कौन होता है मुझे भगाने वाला यहाँ से? चल निकल। तो तुम अभी के लिए जाओ, और इससे तो मैं बाद में बात करती हूँ। तुम्हारी हरकतें बंद नहीं होंगी ना, वो यहाँ आएगा और जाएगा। समझे तुम रोक नहीं सकते उसे। समझे ना? मैं अभी कभी भैया को फोन करता हूँ। हाँ भैया, आप अभी के अभी घर पे आइए। भैया आप पहले घर पे आइए, फिर बात कर बताता हूँ मैं आपको। भैया बोला ना, पहले घर पे आइए आप प्लीज। हाँ भैया, भाभी के बारे में ही बात करनी है, पहले घर पे तो आइए। भाभी ठीक है, आप घर पे आइए पहले। कर लिया खुश? बेस्ट ऑफ लक।
भाभी के बारे में आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? इतनी घबराई हुआ क्यों हो? मैंने भाभी को 2 बार किसी और के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? भाभी के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे हो? अरे होश में तो हो तुम। भैया मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ? कहाँ है तुम्हारी भाभी? आजल, आजल, आती हूँ। अरे आजल, अरे क्या हुआ? अरे बताओ तो क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तुम्हारा ये घटिया भाई है ना, जिसको मैंने अपने बच्चे की तरह रखा, पता है रोज रोज चोरी से पैसे मांग मांग के लेके जाता है। और आज तो है ना, इसने मुझसे 50,000 रुपए मांगे नए फोन के लिए। मेरे पास नहीं थे इतने पैसे, तो ये मुझ पे गलत गलत इल्जाम लगा रहा है। नहीं भैया, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई पैसे नहीं मांगे भैया। भैया ये आपको धोखा देती है। आपके पीठ पीछे इनको मैं किसी से मिलते देखा। नहीं, अभी देखा ना आपने, इसको मैंने पैसे नहीं दिए तो ये कैसे झूठे इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। बोलता है, अब मुझे कैरेक्टर लेस भी बोल रहा है आपके सामने। चुप हो जाओ। हाँ भैया, ये सही में कैरेक्टर लेस है। तू भाभी को ऐसी बात बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आ रही है? कैरेक्टरलेस बोलता है इसको? हैं? तू अपनी अय्यासी के लिए किसी को ऊपर इल्जाम लगा देगा? अरे मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया है? परवरिश में हमने क्या कमी की थी? तुम अपनी भाभी पे इतना, अरे कितना तुमको ये मानती है? हैं? भैया मैं सही बोल रहा हूँ। चुप। अगर एक शब्द भी बोला ना, तो बचपन से ये हाथ नहीं उठाया ना तेरे ऊपर, फिर दोबारा उठ जाएगा। समझ गया ना? और अभी जा यहां से, निकल जा मेरे सामने से। तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो चलो, ये बैग अब बोला ना, चुप हो जाओ। आज मेरे भाई ने पहली बार मेरे पे हाथ उठाया, वो भी उस कैरेक्टरलेस औरत के लिए। मैं अपने भाई को उस औरत से कैसे भी बचाऊंगा, और मैं अपने आप को सही साबित करके रहूंगा। भैया, हाँ बोल। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी भैया। मुझे घर से मत निकालो प्लीज। ठीक है, तो मेरा छोटा भाई है, लास्ट चांस तुझे देता हूँ। अगर आइंदा अगर गलती हुआ ना, तो सीधा घर से धक्के मार के निकाल दो। समझ गया ना? थैंक यू भैया। अंदर जाओ। तुम्हें पता है ना, आज घर में कोई नहीं है। हाँ तो आ जाते। पता है उस दिन से गए थे ना,
उसके बाद ना कॉल ना मिलना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अभी ऐसा करो, जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ आपका। जल्दी आना, ओके? आई एम वेटिंग। अब ऐसे देखते ही रहोगे, अंदर भी आओगे? क्यों नहीं? यार तुम कितनी देर लगा देते हो ना आने में। अच्छा, क्या बात है? तुम्हें पता था आज घर कोई नहीं है, फिर भी। इसीलिए फोन करके बुलाया ना? हम्म। हाँ भैया। हेलो भैया, आप जल्दी से घर आइए। क्या हुआ राहुल? भैया आप घर आइए, भाभी की बहुत तेज तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ भैया, घर आइए, जल्दी आइए। मैं आता हूँ। अब पता चलेगा भाभी को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आज। जब भैया अपने आंखों से देखेंगे ना, फिर पता चलेगा। राहुल भैया आ गए आप? भाभी की बहुत तेज तबीयत खराब है, वो रूम के अंदर है। रूम के अंदर? हाँ। आंचल, आंचल। ये सब क्या हो रहा है ये घर में? और ये कौन है ये? क्या वो हो? भैया मैंने आपको बोला था ना। सॉरी भैया, मैंने आपको झूठ बोलकर बुलाया यहाँ पे, ये सब दिखाने के लिए। भैया मैं चाहता था कि आप अपनी आंखों से देखो ये सब, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अकेली घर में रह के यही सब करती हो तुम? राहुल सही कहता था, तुम कैरेक्टर लेस औरत हो, और इस आदमी के साथ रोमांस का खेल खेल रही हो। नाटक कर रही है, मेरे भाई को बोलती है तुम? नाटक कर रही है। निकल मेरे घर से, निकल अभी, चल निकल मेरे घर से, आज के बाद आना नहीं।
पूरी तरह जली हुई है। सब ठीक हो जाएगा। सर वो बड़े साहब किधर है? वापस चाहिए सर। जी बोलिए, क्या बात है? सर वो सर हमारे घर पे चोरी हो गई है। वो एक औरत आई है और पता नहीं कैसे वो चोरी? सर वो ना, मैं घर पे खाना बना रही थी और फिर उसके बाद मैंने दरवाजे पे सर वो जान डोंट पैनिक, मैं बात करता हूँ। सर मेरा नाम रमेश राज है, ये मेरी वाइफ पुष्पा राज है। हम लोग यही मालाड में रहते हैं। आज दोपहर करीब 2 बजे हमारे घर में चोरी हो गई। 2 बजे नहीं, 3 बजे थे। 3 बजा था उस समय। सर उस समय घर पे मैं थी। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। सर दोपहर के करीब 3 बजे थे। मैंने खाना ही खाया था, अचानक से घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ खड़ी है। दीदी, बच्चे को बहुत जोर से सुसु आई है, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? मन तो नहीं हुआ कि किसी अनजान को घर में आने दो, लेकिन फिर लगा कि एक औरत ही है अपने छोटे से बच्चे के साथ, इसलिए मैंने उसे घर में आने दिया। वॉशरूम है तो यूज कर रहा हूँ। फिर मैं किचन में चली गई, कुछ काम करने लगी और अचानक से मुझे याद आया कि 10 मिनट से वो औरत हमारे घर में थी। ये अब तक वॉशरूम में क्या कर रही है? सॉरी दीदी, थोड़ा लेट हो गया। वो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सर उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने अपना काम खत्म किया। फिर जब मैं हॉल में गई तो मैंने देखा कि क्या आपके घर से सिर्फ एक फोटो फ्रेम चोरी हुआ है और आप दोनों यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आ गए? एक्चुअली वो फोटो फ्रेम कोई आम फ्रेम तो था नहीं, प्योर 22 कैरेट गोल्ड का बना हुआ था। सर हमारे घर के पास ही ज्वेलरी शॉप है, वहीं से बनवाया था। 1 लाख का होगा सर। मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था वेडिंग एनिवर्सरी में। वाओ। अच्छा उस औरत को कैसे मालूम पड़ा कि वो फ्रेम गोल्ड का ही था? और अगर वो औरत बच्चे को लेकर चोरी के इरादे से आई होती तो घर का कोई और सामान नहीं ले जाती? पूरा मोहल्ला जानता था उस फ्रेम के बारे में। हमने वो गजेंद्र भाई से ही तो बनवाया था, जो हमारे पड़ोसी हैं। जब इन्होंने मुझे वो फ्रेम गिफ्ट किया था तो ये बात पूरी सोसाइटी में आग की तरह फैल गई थी। ठीक है, अब हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस औरत का स्केच बनाने में मदद कीजिए। काबिल सर। सर पुष्पा ने ये स्केच बनवाया। सर वो औरत जिसने रमेश और पुष्पा के घर से उस कीमती फोटो फ्रेम को चुराया था, उसका कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा। कोई चोरी करने वाला पुराना गिरोह? नहीं सर, मैंने हर पॉसिबल तरीके से क्रॉस चेक किया और अपने खबरियों को उसका स्केच भी फॉरवर्ड किया, लेकिन उसका कहीं से कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है ये उस औरत की पहली चोरी हो। ये भी हो सकता है कि वो जो बच्चा उसके साथ था वो उसका ना हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है। सर वो आए नहीं। सर मेरे पति गायब हो गए। सर मेरे पति रमेश, वो सुबह दुकान गए थे, उसके बाद से वो अब तक वापस नहीं लौटे। सर आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? सर लंच के बाद उनसे बात हुई थी, लेकिन अब तो उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ पर है दुकान उनकी? सर वो मलाड बेस में स्टेशन के बिल्कुल सामने दुकान है। किस चीज की दुकान है? सर वो लेडीज के अंडरगारमेंट्स की दुकान है मेरे पति की। मैडम ये देखिए, सबसे बढ़िया क्वालिटी इसकी, लॉन्ग लास्टिंग है सबसे। एक बार आप पहन के देखिए, एक बार ट्राई कीजिए आप। नहीं, मुझे कोई और दिखाइए। ये देखिए मैडम, ये अमेरिकन है, उसका बढ़िया ब्रांड है और इसकी इलास्टिक भी सबसे अच्छी, और इसका कलर भी देखिए। ओके, ट्राई करके देखती हूँ। पुष्कर सिंह। हाँ जी सर, मैं ही हूँ, बताइए। रमेश राज तुम्हारा पार्टनर है इस दुकान में, कहाँ हो? सर रमेश तो कल से आया नहीं है शॉप पे, और वो वैसे भी रोज रोज नहीं आता। मैंने उसको वो फोन भी किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। तो उसके घर पे फोन ट्राई नहीं किया? उसकी बीवी उठा लेती तो सर कुछ गड़बड़ हो जाती। क्या गड़बड़ हो जाती? मेरी भाभी से बनती नहीं सर। उसके जैसी मैंने चरित्रहीन औरत आज तक नहीं देखी। तो मुझे ना मोह माया के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। ये लो चावल, रखना भूल गई थी। जी भाभी। और खाना कैसा लगा? मैंने खास अपने हाथों से बनाया था तुम्हारे लिए। पनीर बहुत पसंद है ना तुम्हें? जी पर आपको कैसे पता चला भाभी? भाभी मत कहो ना, पुष्पा बुलाओ।
अकेले में इतना हक तो है ना तुम्हारा हम पे। मैं कुछ समझा नहीं भाभी। कुछ बातें समझाई नहीं जाती है पुष्कर बाबू। भाभी सब वो बड़ी अजीब औरत है। वो कोई ना कोई मौका जरूर काटती थी कि मैं उसके माया जाल में फंस जाऊं और उसके बेड तक पहुंच जाऊं। और रमेश वो जानता है अपनी बीवी की हरकतों के बारे में? नहीं सर, मैंने कभी बताया नहीं। सर हम यहाँ रोजी रोटी कमाने आए हैं, इन फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना है। सर मैं किसी को बताता तो मेरे ऊपर कोई यकीन भी नहीं करता। रमेश और कहाँ जा सकता है? पता नहीं सर, शायद अपनी बीवी की हरकतों की वजह से भाग गया होगा कहीं। उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। सर मैं आपको बता रही हूँ वो एक नंबर का झूठा इंसान है और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि जरूर मेरे पति के साथ भी उसी ने ही कुछ किया है। लेकिन पुष्कर ऐसा क्यों करेगा? मुझे पाने के लिए। और क्यों? मतलब वो एक नंबर का नीच और गिरा हुआ इंसान है। मुझ में चांस मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। ये लो चावल। और खाना कैसा लगा? खाना एकदम तुम्हारी तरह था पुष्पा, बहुत रसीला लजीज। ये क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो? और अभी तक तो भाभी भाभी बोलते थे, ये नाम से क्यों बुला रहे हो? तो तुम भी मुझे बुला लो पुष्कर। पुष्कर की पुष्पा। आई लव यू यार। सर मैं एक पवित्र और पतिव्रता औरत हूँ और वो पुष्कर एक नंबर का नीच इंसान है। एक थप्पड़ से भी नहीं माना वो। तो आपने ये सब कभी रमेश को बताया नहीं? नहीं सर, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो और उनके धंधे पे कोई असर पड़े। घर में से रमेश का कुछ सामान मिसिंग है? नहीं, सब कुछ यही है। एक बार हम देखें। देख लीजिए। मुंबई के उपनगर मलाड में रहने वाले रमेश राज और पुष्पा राज के घर से दिन दहाड़े 1 लाख का एक कीमती फ्रेम चोरी हो जाता है। चोरी करने वाली महिला बड़े आराम से एक बच्चे के साथ आती है और वारदात को अंजाम देकर चली जाती है। पुलिस इस महिला का पता लगा ही रही होती है कि ठीक अगले दिन रमेश राज लापता हो जाता है। आखिर कहाँ गया था रमेश? क्या हुआ था उसके साथ? इस सब के बीच पुलिस के हाथ लगी थी एक कहानी जो रमेश का पार्टनर पुष्कर और रमेश की बीवी पुष्पा सुना रहे थे। कामरे इन सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी खंगालो, तभी पता चलेगा कि पुष्पा और पुष्कर दोनों कितने पानी में हैं। सबकी कॉल रिकॉर्ड से करवाओ और सबके बैकग्राउंड चेक करवाओ। सर हेलो, ठीक है सर। सावन का फोन था। रमेश की लोकेशन हिस्ट्री आ चुकी है। उसकी लास्ट लोकेशन कांदीवली गुरु नानक नगर। चलो क्या है? हमारी हिम्मत कैसे पुलिस के सामने झूठ बोलने की? मैं तुम पे चांस मारती हूँ, मैं तुम पे लाइन मारती हूँ। हाँ तुम मुझ पे चांस मारती हो, तुम मुझ पे लाइन मारती हो। तुम तो हमेशा से ही चाहते थे मेरे नजदीक आना, तो मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया और अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आई, वरना न जाने क्या कर बैठती। बोलो ना क्या करती, बोलो। अब भी तुम्हारे करीब बोलो क्या करती, बोलो। क्या करूंगी मैं? तुझे दिखाती हूँ आज क्या करूंगी मैं। आज तुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। मैं तो पवित्र हूँ, पतिव्रता हूँ। ये सब कैसे किया मैंने? भाभी के बारे में सुना बहुत था, आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्यों भाभी? पुष्कर सच बताओ, कहीं मेरे करीब आने के लिए तुमने रमेश के साथ तो यही बात मैं तुमसे पूछूं तो? हाँ सर, वो फोटो फ्रेम मैंने ही चुराया था रमेश के घर से। रमेश को कैसे जानती और उस फ्रेम के बारे में कैसे पता चला? सर रमेश मेरा पति है और ये हम दोनों का ही बच्चा है। रमेश तुम्हारा पति है? हाँ सर। अक्सर वो घर से बाहर ही रहता था काम के बहाने से। पूरे दिन मेरा फोन नहीं उठाता था। मुझे शक हुआ कि ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से उसे फोन तक उठाने का मौका नहीं मिलता।
इसीलिए एक दिन मैंने उसका पीछा किया। तब मुझे रमेश और पुष्पा के बारे में पता चला। उसने मेरे अलावा किसी और से शादी कर ली थी। और इस वजह से तुमने 1 लाख रुपए का फोटो फ्रेम चुरा लिया? नहीं सर, वो फोटो फ्रेम 1 लाख का ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो बस उस फोटो फ्रेम से रमेश और पुष्पा की फोटो चुराना चाहती थी, सबूत के तौर पे। लेकिन पुष्पा की बताई हुई स्केच जब रमेश ने देखी तो वो समझ गया कि वो फोटो फ्रेम मैंने ही चुराया है। उसे लगा था कि ये सब मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। धोखा देते हो ना, धोखा देते हो ना। शर्म तो आई थी तुम्हें, तुमसे शादी करके बैठे हुए मुझे बताया करने तुम्हें। धोखा देते हो तुम मुझे। अरे सुनो, क्या सुनूं? नहीं सुनना है मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुमने धोखा देके टाइम तो शर्म नहीं आई थी ना? नहीं, ये जो हरकतें की है ना, मुझे क्यों नहीं बताया था पहले? तुम हमारे बच्चे की कसम। मेरी बात सुनो, पुष्पा और मेरी शादी को काफी वक्त हो चुका था। मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात तो सुनो नम्रता। मेरी उस औरत के साथ कभी बनी भी नहीं। रोज तो हमारी लड़ाई होती थी। हमारा कोई बच्चा नहीं था। कहाँ से होगा बच्चा जब प्यार ही नहीं था? प्यार नहीं है? नहीं, जिस तरह के प्यार की मुझे जरूरत थी वो सिर्फ मुझे तुमसे मिला नम्रता। अच्छा, तो एक काम करो, उसको छोड़ करके मेरे पास आ जाओ पूरी तरह से। मकान दुकान सब उसी के नाम पे है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं छुपाया, कसम से। माफ कर दो ना प्लीज, प्लीज। एक मिनट। ये लो अपना सामान, निकलो। सामान उठाओ। निकल यहाँ से। उसके बाद रमेश कहाँ गया होगा? मुझे नहीं पता सर, गया होगा उसी चुड़ैल के पास। कमरे रमेश तो काफी टेढ़ी से निकला। 2 बीवियां, 2 अलग जिंदगी, और दोनों को बड़ी सफाई से उल्लू बना रहा था। पुष्पा के हिसाब से वो रमेश के साथ काफी खुश थी। इसका मतलब रमेश ने नम्रता से झूठ बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुष्पा को रमेश का ही सच पता चल गया हो और उसने गुस्से में आके रमेश को कुछ कर दिया? पर सर, अगर ऐसा होता तो पुष्पा खुद आकर मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज करा दिया। कामले कभी कभी चोरी होने पर सबसे ज्यादा शोर चोर खुद मचाता है। हो सकता है पुष्पा भी ऐसे ही कर रही। हेलो सब इंस्पेक्टर कामले। क्या? ठीक है, पहुंचते हैं। सर, गोपालधाम सोसाइटी में एक औरत की लाश मिली है। तो अब तक जिस चोर की तलाश पुलिस को थी वो चोर कोई और नहीं बल्कि रमेश की दूसरी बीवी नम्रता थी। और नम्रता और रमेश का एक बच्चा भी था। पुलिस के सामने बड़ा सवाल अब भी यही था कि आखिरकार 2 औरतों का पति रमेश गायब कहाँ था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि धोखे के जख्म ने इन दोनों पत्नियों में से किसी एक को ऐसा घायल किया था कि उसने रमेश के साथ अपना हिसाब बराबर करने के बारे में सोचा। रमेश के जाने के बाद उसकी पत्नी पुष्पा और उसके पार्टनर पुष्कर का प्रेम प्रसंग जोरों पर था। और वहीं दूसरी तरफ इस केस के अगले मोड़ पर पुलिस के लिए एक ऐसी अनहोनी इंतजार में थी जिसके होने से इस केस का रुख बदलने वाला था। सच बताओ, कहाँ छुपा रखा है अपने पति को? कहाँ है तुम्हारा पति? कहीं नहीं छुपाया सर, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कैसे मान लूं? आप चाहे तो पूरे घर की तलाशी ले लें। पूरे घर की तलाशी ले लूं? पूरे घर में कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी, ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पैर तक। मुझे देखना होगा कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा है तुमने। अगर तुमने कोई हथियार छुपाया होगा ना तो तुम्हें सजा मिलेगी। आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते सर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मुझे देखना होगा कहीं कोई हथियार छुपा के तो नहीं रखा है तुमने। ये तुम्हारा पहला हथियार, तुम्हारे बाल। ये तुम्हारी आंखें हैं, ये तुम्हारा दूसरा हथियार। अब तुम्हें सजा मिलेगी।
जय सर, ये एसआई सत्यजीत कदम। सर मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे इस लड़की की लाश मिली। रिसेंटली मुझे आपके थाने से कुछ फोटोग्राफ्स मिले थे रमेश राज के, और मुझे इस घर से ये मिला है। सर ये रमेश का केस तो और भी लुस्ता हो देगा। सर इस लड़की का नाम श्रुति राज है। घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान है? लो सर, लगता है किलर कोई जान पहचान गई था, इसलिए स्ट्रगल के कोई निशान नहीं। सर रमेश और श्रुति के फोटोज तो कहीं और ही इशारा करते हैं, और इस औरत के साथ रमेश का क्या संबंध? हो सकता है कि ये श्रुति रमेश की तीसरी बीवी हो। मैं तो पवित्र और पतिव्रता हूँ, मैंने ये सब एक बार फिर से कैसे कर लिया? पुष्पा मेरी जान, छोड़ो ना बेकार की बात है। और जब पति चला गया तो क्या फर्क पड़ता है? वहाँ कोई है पुष्कर? खिड़की पे। ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी वो, और उसके घर पे भी उसके पति के अलावा किसी को आते जाते नहीं देखा। मेरा मतलब मैंने उसके मायके और ससुराल वालों को कभी आते जाते नहीं देखा। कभी कभी बात होती थी मेरी उससे, बताती थी उसका पति बहुत अच्छा इंसान है। नहीं, ये सही नहीं है। आप मुझे कुछ भी कहेंगे मैं आपकी बात मान लूंगी। 3 साल से नम्रता के साथ शादी और 2 महीने से श्रुति के साथ, ये सब झूठ है। आज के टाइम पे रमेश जैसा अच्छा पति किसी को नहीं मिलता है, इसीलिए ये सब मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है। सर, क्या ये सब वाकई में सही है? क्या रमेश ने मुझे सच में धोखा दिया है? और ये श्रुति को किसने मारा? सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रमेश के नाम के अलावा और कुछ जानते ही नहीं। सर उसका नाम तो रमेश ही था ना? नहीं, या फिर आप बाद में कहोगे कि उसका नाम रमेश ही नहीं था। सर रमेश 3 बीवियां रखता था और किसी को भी कानों कान खबर तक नहीं थी। भाई तीसरी वाली को भी रमेश ने तो नहीं मार दिया? सर पति पत्नी के बीच में तो कभी कभार झगड़े होते ही रहते हैं ना। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे धोखा देगा। आपको पता है रमेश के रहते मैंने कभी किसी और की तरफ नजरें उठा के भी नहीं देखा। देखिए आपकी साथी नहीं, बाकी शादियों में भी उसकी यही रिपोर्ट है। श्रुति और नम्रता के लिए भी वो एक बहुत अच्छा पति था। आप ही बताइए, एक साथ एक ही बार 3 बीवियों से वो सच्चा प्यार करता था? सर मैंने श्रुति के बिल्डिंग के वॉचमैन से बात की और रजिस्टर भी चेक किया और पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन 3 तारीख की शाम को ऐसा कोई भी आदमी वहां पे नहीं आया जिसपे हमें शक हो, और रमेश भी उस दिन उस बिल्डिंग में नहीं आया था। श्रुति की बॉडी को भी अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया। हो सकता है श्रुति की अपने परिवार वालों से काफी कम बात होती हो और इसीलिए वो लोग श्रुति के मर्डर से बेखबर है। श्रुति के परिवार वालों का पता करो और श्रुति के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सब भाड़ में गई पवित्रता और पतिव्रता। साला मेरे पीठ पीछे कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता था। मैं यहाँ उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती रही। जानू ये जानू वो, मीठी मीठी बातें करता रहा और मुझे फुसलाता रहा और खुद पता नहीं क्या क्या कर रहा था। पुष्पा मेरी जान, उसने तुम्हारे साथ चीटिंग की, तुम भी उसके साथ चीटिंग करो। चीटिंग करो बस। मैं तो कहती हूँ कि रमेश मिले ना मिले, मर जाए ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो वापस आ गया ना उस दिन ही उसे तलाक दे दूंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या हुआ? पुष्पा हमारा मिलना, हमारा मजे करना ओके, लेकिन गलती से अपने दिमाग में ये मत सोच लेना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना ही होगा। मैं दूसरी बार धोखा नहीं खा सकती पुष्कर। ये सब तो उस आदमी की वजह से ही हुआ है। हमने श्रुति को समझाने की बहुत कोशिश की। किस आदमी की बात कर रही हो? वही कमीना रमेश छीन कर दे गया अपनी बेटी को हमसे। जब से वो श्रुति की जिंदगी में आया सब कुछ खत्म हो गया। तुमने कितनी कोशिश की श्रुति को समझाने की,
यहाँ तक कि हमने उसे समझाने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया। तेरे दिमाग में क्या गोबर भर गया है जो तू सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस रमेश के साथ तू अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है? अरे 2 शादियां कर चुका है वो, दूसरी बीवी से उसे एक बच्चा भी है। Who cares, Dad? और वैसे भी किसी की पास्ट लाइफ नहीं देखनी चाहिए। चलो मान लिया वो कमीना है, पर है तो मेरा ही ना। I love him, Dad, and this is enough for me. मैं उसी से शादी करूंगी। सर, रमेश की तीनों बीवियों में से सिर्फ एक श्रुति थी जिसे रमेश की सच्चाई शुरू से पता थी, और कुछ दिन पहले बस नम्रता को इन सब के बारे में पता चला। हाँ कमरे, लेकिन 3 साल बाद अचानक उसे रमेश पर शक कैसे हुआ? सर, एक औरत को पता चल ही जाता है कि उसके पति का कहाँ और क्या चल रहा है। सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि रमेश बहुत अच्छा पति था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। कहीं ना कहीं कुछ तो था जो मुझे खटक रहा था। नहीं सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रमेश मेरे साथ ऐसा करेगा, और मुझे 1% भी आइडिया नहीं था उसकी बाकी की बीवियों के बारे में। अच्छा, सिक्स सेंस। हाँ, ये देखिए, ये आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसमें आपने लगातार कई बार श्रुति से बात की है। देखिए पुष्पा जी, आपके दर्द को देखकर हमें भी बहुत दर्द हो रहा है, पर एक दर्द आपका ये कॉल डिटेल्स भी हमें दे रहा है। जरा इस पर मरहम लगाने का काम करेंगे आप? खड़क तो मुझे ये बात भी रही है कि आखिर रमेश गायब है, श्रुति मर चुकी है, लेकिन आप लगातार श्रुति से फोन पे टच में थी। सर वो एक्चुअली श्रुति मिली थी मुझे। उसने मुझे सामने से कांटेक्ट किया था, इसीलिए मैं उसके कांटेक्ट में आई। देखो नम्रता, मुझे पता था कि तुम फोन पर बोल देने से विश्वास नहीं करोगी, और आपको तो प्रूफ ना। अब विश्वास हुआ? सिर्फ मैं और तुम नहीं, एक और बीवी है रमेश की, पुष्पा। बहुत बड़ा धोखेबाज है वो, और तुम्हारे साथ तो बच्चा भी है रमेश का। चलो, बच्चे का खर्च तो मैं निकाल दूंगी, दर्द जो समझती हो तुम्हारा, तुम बस उसे भूल जाओ। हाँ, वो अब सिर्फ मेरा है। सर, उन फोटोज को देखकर मेरा दिल और दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि रमेश मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मुझे लगा कि वो लड़की झूठे फोटोज दिखाकर, झूठी बातें करके मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है। सर, जब वो मेरे कांटेक्ट में आई तो उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली जिन पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन था। अरे क्या रखा है धोखेबाज पति में, छोड़ दे उसे। तेरी जैसी 2 और बीवियां हैं उसकी। देख, तू जो भी है, तेरे कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी बात पे मैं अपने पति पर से विश्वास थोड़ी खो बैठूंगी। इतने सालों का साथ है हम दोनों का। तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे ये जानने के लिए कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, समझी? सर, मैं तो पवित्र और पतिव्रता औरत हूँ। मैं रमेश के अलावा और किसी की बात पर यकीन नहीं करती, इसीलिए मैंने ये सब कुछ जाके रमेश को बताया। किसका फोन था? कौन थी वो लड़की, नाम बताया उसने? पता नहीं रमेश कौन थी वो लड़की, लेकिन फोन पे सिर्फ बकवास किए जा रही थी। कह रही थी कि मेरे अलावा तुम्हारी और भी बीवियां हैं, और तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। जानू, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे सकता है? हाँ? कैसी बातें कर रहे हो तुम रमेश? इतने सालों से जानती हूँ तुम्हें, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। थैंक यू जानू। ये कोई भी हो, किसी न किसी बात पर दुश्मनी जरूर निकाल रहा है मुझसे। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ कौन है। तो ये सब बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब बातें मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। सर, मुझे रमेश की दोनों बीवियों पुष्पा और नम्रता की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के टच में श्रुति आई हो, श्रुति ने इन दोनों से रमेश की जिंदगी से जाने के लिए कहा हो, और इसी बात को लेकर इन दोनों ने श्रुति को मार दिया। और सर, रमेश भी काफी वक्त से लापता है। हो सकता है कि इन दोनों ने रमेश को भी मारकर कहीं पे ठिकाने लगा दिया। कामरे, ये भी तो हो सकता है कि जब श्रुति रमेश की सच्चाई सबके सामने ले आई तो रमेश को श्रुति से खतरा होने लगा, और रमेश ने श्रुति को मरवा दिया हो और वो अब कहीं भाग गया। और सर, ये भी बात गौर करने वाली है कि अब तक उसकी किसी भी बीवी ने उसकी बुराई नहीं किया। सबके लिए वो एक अच्छा और केयरिंग पति था। लेकिन इतना पक्का है कामरे, ये रमेश काफी शार्प है।
3 दिन से गायब है। रमेश मेरा पति है। रमेश मेरा पति है। सर मेरा पति है। रिपोर्ट नहीं लिखा है सर देखिए तो सही आप। सर ये मेरे पति हैं सर ये झूठ बोल रही है सर मेरा पति कंप्लेन तो लिख लीजिए ये डीलिंग है सर क्या बोल रहे हैं सर? आप लोग शांत हो जाइए, सबसे पहले शांत हो जाइए, एक एक करके अपनी स्टेटमेंट लिखवाइए। ईश्वरी सर जी स्टेटमेंट लिखा। सर ये केस तो और भी सेंसिटिव होता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इस रमेश ने और कितनी औरतों को चुनने लगाया होगा। सवाल ये उठता है कामड़े कि अभी रमेश है कहाँ? अब तक ये केस सिर्फ मल्टीपल मैरिजेस का केस लग रहा था, जहाँ रमेश की 3 पत्नियों पुष्पा, नम्रता और श्रुति का नाम पुलिस के सामने आया था। इन तीनों में से श्रुति का कत्ल हो चुका था और रमेश का भी अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था। लेकिन श्रुति का कत्ल किसने और क्यों किया था? श्रुति पुष्पा और नम्रता दोनों के साथ संपर्क में थी और श्रुति ने ही इन दोनों को रमेश की सच्चाई बताई थी। श्रुति की हत्या को लेकर पुलिस के सामने 2 थ्योरीज थी। एक तो ये कि रमेश की पत्नियों में से ही किसी ने गुस्से में आकर श्रुति का मर्डर कर दिया था, या फिर ये कि अपनी पोल खुलते देखकर रमेश ने ही श्रुति को मौत के घाट उतार दिया था और खुद कहीं गायब हो गया था। आखिर सच था क्या? श्रुति की हत्या और रमेश का गायब होना इस केस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाए हुए था। कामड़े, फिलहाल हमारे पास रमेश का पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है, यानी 2010 से लेकर के अब तक का। जनवरी 2010 में उसने पुष्पा से शादी की, अप्रैल 2011 में सपना से, 2012 में उसने 2 शादियां की, ऋतु और सानिका, 2013 में नम्रता, 14 में करुणा, 15 में अर्चना और 2016 में श्रुति। न जाने और कितनी औरतों से उसने शादियां की होगी। सर एक बात और, आज जब मैंने श्रुति का कॉल रिकॉर्ड दोबारा से अच्छी तरीके से खंगाली तो एक बात पता चली। श्रुति ने रमेश की लगभग हर बीवी को ट्रेस किया। उसके कॉल रिकॉर्ड में मुझे सबके नंबर मिले। श्रुति ने सामने से कभी ना कभी इन सबको कॉल किया था सर। हो सकता है श्रुति ने ये सारे नंबर रमेश के मोबाइल से निकाले हो। 2 चीजें हैं कामड़े, या तो ये रमेश पागल है या ये कोई बहुत बड़ा स्कैम है। अगर मान लो कि ये कोई स्कैम है, तभी सवाल ये उठता है कि रमेश इतनी सारी औरतों के साथ कंटिन्यूस रिश्ते में क्यों रहा? हेलो, क्या? सर बॉडी पे मल्टीपल स्टैबिंग है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो सर। आपने फोन किया था ना? हाँ साहब। कब देखा ये आपने? साहब मैं और पुष्पा रोज 4 बजे सब्जी लेने जाते थे। रोज की तरह आज फिर मैं इसको बुलाने के लिए आई थी। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो ये घर से सारा कैश, ज्वेलरी और कीमती सामान गायब है। ये केस लग तो रॉबरी कर रहा है। पिछली बार इस घर में नम्रता घुसी थी, इस बार कौन हो सकता है? सर ये रमेश हो सकता है। वैसे बिना पैसों के कितने दिन यहाँ पर घूमता। उसने खुद ही पैसे घर पे रखे थे और जरूरत पड़ी तो लूट के दे दिया। हेलो, सब इंस्पेक्टर आकाश कामड़े गया क्या? ठीक है, आप उसे तुरंत अरेस्ट करके यहाँ पे रिपोर्ट करने की तैयारी कीजिए। हम अथॉरिटी लेटर फॉरवर्ड करते हैं। सर पटना पुलिस का फोन था, पटना के मोरे लोग में रमेश को देखा गया। अरे बेटा तो एक शांति से खेलो ना, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? और आप भी ना कुछ नहीं बोलते इन्हें। प्लीज सब फेस में नहीं, तेरा थोबड़ा खराब हो जाएगा और बाकी औरतों को शादी के जाल में फांस नहीं पाएगा। 9 औरतों के साथ तूने शादी की, सबको उल्लू बना के लूटा
और पुष्पा और श्रुति का मर्डर किया। सर एक सेकेंड, मैं आपको सब सच सच बता रहा हूँ। सर मैंने आज तक किसी को फिजिकली हर्ट तक नहीं किया है, ऊंची आवाज में किसी से बात तक नहीं की है मैंने। उस दिन नम्रता से लड़ाई हुई, उसके बाद मैं वहां से चला गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं। नम्रता, श्रुति और पुष्पा तीनों को मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया था। अब गुस्सा होने से तो कोई फायदा था नहीं, मुझे लगा शांति से काम लेना चाहिए। सब लोकमान्य तिलक सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिकट ली और सीधा अपनी पहली बीबी सिमोना के पास पटना चला गया। मुझे मालूम है सर, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा ना। एक सेकंड सर, ये देखिए, ये टिकट है। अब आप मुझे मार के, पीट के या फिर किसी से भी पूछताछ करके तसल्ली करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सर मैं एक ही बात बोलूंगा और सच बोलूंगा, जब श्रुति का मर्डर हुआ तब मैं ट्रेन में था। साहब जब अचानक इतने महीनों बाद ही आए तो टीवी पे इनका मिसिंग रिपोर्ट और उन दो औरतों की खून की खबर चलने लगी, तो हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि सच क्या है। सर मैं खुद ही आने वाला था पुलिस स्टेशन आप लोगों को सब सच सच बताने के लिए। मैं आता इससे पहले आप लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। और सर जहाँ तक पुष्पा की बात है ना, आप पटना में जाके मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ कर लीजिए। मैं उस वक्त वहीं था अपनी बीवी सुमना के साथ। मैं मानता हूँ सर, मैंने गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी लड़कियों से शादियां की, उनको बेवकूफ बनाया, उनके पैसे लूटे, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया सर, कसम से। पुष्पा मर गई, श्रुति मर गई, तो आप लोग सीधा मेरे पास चले आए। सर 2 साल के बच्चे को लेकर 2 लोगों का खून कर दूंगी मैं। ना करने की भी कोई वजह नहीं है ना नम्रता। रमेश से तुम बहुत प्यार करती हो, बच्चा है, बच्चे के पीछे रमेश का नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमेश को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए तुमने उसकी दोनों बीवियों को बारी बारी से अपने रास्ते से हटा दिया। सर फिर तो मुझे वो सीरियल किलर बन जाना चाहिए। सर मेरी जिंदगी रमेश के पीछे पहले ही बर्बाद हो चुकी है, अब वो अपनी जिंदगी में किसी से भी शादी करे, बच्चे करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैंने रमेश के बयान को क्रॉस वेरीफाई किया, वो सच कह रहा है। 3 तारीख की शाम जिस वक्त श्रुति का मर्डर हुआ उस वक्त वो मुंबई से पटना जाने वाली ट्रेन 12141 लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस में था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दोनों खून किसी और ने किए। मेरा मतलब है कि दोनों मर्डर्स के पीछे 2 अलग लोग और 2 अलग मोटिव्स हो सकते हैं। कामरा में इस केस को रिविजिट करना पड़ेगा, कोई तो कड़ी है जो मिसिंग है। सब कुछ पता चला कि ये सब किसने किया? बहुत कुछ पता चला है और बहुत कुछ पता करना बाकी है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। क्यों सर? अरे सर मैंने क्या बताया? सर मैंने कुछ सर सुनिए तो सर। बहुत खुश हुआ होगा ना पुष्पा की मौत से, तेरी बनती नहीं थी ना उससे। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी बनती नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसकी मौत से मैं खुश हो जाऊं। सब रमेश के जाने के बाद मैंने सोचा कि हर महीने उसके हिस्से का पैसा मैं उसकी पत्नी को दे दिया करूं, लेकिन अब तो काफी ऊंचे ख्याल है कर। बहुत सोचता था ना रमेश और पुष्पा के बारे में। एक बात बता, रमेश के गायब होने के बाद तेरे अंदर ऐसा कौन सा महात्मा जाग गया कि तू रोज पुष्पा के घर जाने लगा? पुष्पा तुझसे अंडरगारमेंट्स तो खरीदती नहीं होगी, घंटों वहां क्या होता था? तेरे कॉल रिकॉर्ड्स जिसमें रमेश के जाने के बाद पुष्पा से तेरे फ्रीक्वेंट कॉल्स और पुष्पा के पड़ोसी जिन्होंने तुझे पुष्पा के घर रात बेरात आते हुए जाते हुए देखा है और 2-2 4-4 घंटे रुकते हुए देखा है, उन्होंने आधा पिक्चर तो क्लियर कर दिया, बाकी बचा आधा पिक्चर तू क्लियर कर। साहब मैं रोज दुकान बंद करने के बाद पुष्पा के पास जाता था उसको हिसाब देने, सारा का सारा हिसाब देता था और कब कहाँ कौन सा माल खरीदना है, कौन सा बेचना है, कौन सा क्या करना है, सिर्फ पुष्पा से डिस्कस करता था। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स और ये तेरा एमएमएस जो तुम दोनों एक दूसरे को भेजते थे, और बाकी बच्चा पुष्पा के पड़ोसी हमें बता चुके हैं। सब बता दो, हमारे नहीं सब। हाँ साहब मेरा और पुष्पा का संबंध था, लेकिन साहब रमेश के गायब होने के बाद था। साहब वो हमसे शादी करने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। पुष्पा चाहती थी कि तू अपनी बीवी को छोड़ के उससे शादी कर ले। पहले तो तूने बहुत मजे मारे, लेकिन जब पुष्पा तेरे गले पड़ने लगी और तुझे अपनी जिंदगी में मुश्किल आती हुई दिखी तो तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, ये छोटी मुसीबत को बचाने के लिए
मुसीबतों का भार अपने सर पे ले लूंगा साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब, मेरी बात पे यकीन मानो साहब। पुष्कर और इस केस से जुड़े सब लोगों की सारी हिस्ट्री निकाल। फिलहाल हमारे लिए सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स। सर, मैंने श्रुति का बैकग्राउंड और कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक किया। एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। एक नंबर है जिसपे श्रुति के फ्रीक्वेंट कॉल्स थे। सर, मैंने पता किया तो वो नंबर एक प्राइवेट डिटेक्टिव का ही है। राहुल रंजन का नाम है सर। बुलाओ उसको थाने। सर, Welcome to the Huber Lab podcast. We discuss science and science-based tools for everyday life. I'm Andrew Huberman, and I'm a professor of neurobiology and ophthalmology at Stanford School of Medicine. Today, we are going to talk all about dopamine and what drives you to do the things that you do. We're going to talk about motivation and desire and craving, but also how dopamine relates to satisfaction and our feelings of well-being. And of course, any discussion about dopamine has to include a discussion about the potential for dopamine-induced addiction. Indeed, dopamine lies at the heart of addiction to all things. But today we are mainly going to focus on how what we do and how we do it and how we conceptualize those things leads to changes in this amazing molecule in our brain and bodies that we call dopamine. I'm going to teach you what dopamine is and what it is not. There are a lot of myths about the molecule dopamine. We often hear about so-called dopamine hits. Today we are going to dispel many common myths about dopamine, and we are going to talk about how dopamine actually works. We're going to discuss the biology of dopamine, the psychology. We will discuss some neural circuits, and a really exciting aspect of dopamine biology are so-called dopamine schedules. In other words, we are going to discuss how things like food, drugs, caffeine, pornography, even some plant-based compounds can change our baseline levels of dopamine, and in doing so, they change how much dopamine we are capable of experiencing from what could be very satisfying events or events that make us feel not so good because of things that we did or took prior. So I promise you it's going to be a vast discussion, but I will structure it for you, and you'll come away with a deep understanding of really what drives you. You will also come away with a lot of tools how to leverage dopamine so that you can sustain energy, drive, and motivation for the things that are important to you over long periods of time. Before we dive into the meat of today's discussion, I'd like to share with you a fascinating result that really underscores what dopamine is capable of in our brains and bodies, and underscores the fact that just through behaviors, no drugs, nothing of that sort, just through behaviors, we can achieve terrifically high increases in dopamine that are very long and sustained in ways that serve us. This is a result that was published in the European Journal of Physiology. I'll go into it in more detail later, but essentially what it involved is having human subjects get into water of different temperatures. So it was warm water, moderately cool water, and cold water. Had them stay in that water for up to an hour, and they measured, by way of blood draw, things like cortisol, norepinephrine, and dopamine. What was fascinating is that cold water exposure led to very rapid increases in norepinephrine and epinephrine, which is also just called adrenaline. It also led to increases in dopamine, and these increases in dopamine were very significant. They kicked in around 10 or 15 minutes after submersion into the cold water, and I should mention the head wasn't below water, it was just up to the neck. And the dopamine release continued to rise and eventually reached 250% above baseline. Now, what was interesting is after subjects got out
of this cold water, that dopamine increase was sustained. And I know nowadays many people are interested in using cold water therapy as a way to increase metabolism and fat loss, but also to improve sense of well-being, improve cognition, improve clarity of mind. There's something really special about this very alert but calm state of mind. That seems to be the one that's optimal for pretty much everything except sleep. But for all aspects of work and for social engagement and for sport, that highly alert but calm state of mind really is the sweet spot that I believe most of us would like to achieve. And this cold water exposure, done correctly, really can help people achieve that state of mind through these increases in dopamine that last a very long time. So I will later detail the specifics of that study, what it entailed in terms of how long the variations that different subjects experienced, as well as how to limit the amount of stress hormone, cortisol, that's released as a consequence of the cold water. And we will also talk about compounds, supplements that people can take in order to increase their levels of dopamine, should they choose. Before we begin, I'd like to emphasize that this podcast is separate from my teaching and research roles at Stanford. It is, however, part of my desire and effort to bring zero cost to consumer information about science and science-related tools to the general public. In keeping with that theme, I'd like to thank the sponsors of today's podcast. Our first sponsor is Roka. Roka makes sunglasses and eyeglasses that are of the absolute highest quality. I've spent a lifetime working on the visual system, and I can tell you that the visual system has to go through a lot of work in order to maintain clarity of what you see when there are shadows, when you go into different types of indoor lighting, and so on. And a lot of glasses don't work well because you put them on, and then you're in bright light, and you can see fine, but then you move into a shadow, and then you have to take them off, and they don't adjust, or they don't adjust quickly enough. With Roka, their eyeglasses and sunglasses are designed with the visual system biology in mind, so you always see things with perfect clarity. The glasses are also terrific because they're very lightweight, and they won't slip off your face if you're exercising, if you're running or biking. In fact, they were designed for the purpose of being able to be worn while you are engaging in those sorts of activities or simply working at your desk. I happen to wear readers at night when I drive or when I work, and I love their sunglasses because I can wear them anywhere, and also the aesthetics of their sunglasses and eyeglasses are terrific. Unlike a lot of other performance glasses that frankly make people look like cyborgs, the aesthetics on Rokas are really terrific. You can wear them anywhere you'd like to go. If you'd like to try Roka glasses, you can go to roka.com, that's ROKA.com, and enter the code Huberman to save 20% off your first order. That's Roka, ROKA.com, enter the code Huberman at checkout. Today's podcast is also brought to us by Inside Tracker. Inside Tracker is a personalized nutrition platform that analyzes data from your blood and DNA to help you better understand your body and help you reach your health goals. I'm a big believer in getting regular blood work done. And now with the advent of modern DNA tests, you can also analyze your DNA to see what you ought to be doing for your immediate and long-term health. We hear a lot these days about optimization, optimizing hormones, optimizing your metabolism, optimizing this, optimizing that. But unless you know the measurements of metabolic factors, hormones, and other things that are in your blood and DNA, you don't know what to optimize. With Inside Tracker, it makes all of that very easy. They can come to your house to take the blood and DNA test, or you can go to a nearby clinic. They send you the information, and you take those results, and unlike a lot of laboratories doing blood work out there and DNA tests, they have a simple platform, a dashboard that walks you through your results and helps you identify what sorts of nutritional or behavioral or other types of practices you might want to incorporate into your life in order to positively impact your immediate and long-term health. It's a very easy system to use, and you will gain a ton of information simply by doing that test, whether or not you end up making changes to what you're doing or not. If you'd like to try Inside Tracker, you can go to insidetracker.com/Huberman to get 25% off any of Inside Tracker's plans. Just use the code Huberman at checkout. Today's episode is also brought to us by Headspace. Headspace is a meditation app backed by 25 published studies and has over 600,000 five-star reviews. I've been meditating for a long time, but I confess sometimes I meditate and sometimes I am very inconsistent about my meditation. Ideally, I would meditate every day for 20 or 30 minutes. But what I've found over the years is that I'll start a meditation practice, and then as life gets more stressful or busier, which is exactly when I need to meditate more, I tend to meditate less often.
Switching over to Headspace as a meditation app really helped me stay consistent with my meditation practice. And that's because they have a huge range of meditations to select from. Some are short, some are longer. And in general, I try and get 20 minutes of meditation in every day, but some days it's just 5 minutes, and they have some terrific just 5-minute meditations. The science says that even a 5-minute meditation can be beneficial for different aspects of our brain and body. If you want to try Headspace, you can go to headspace.com/special offer. And if you do that, you'll get 1 month as a free trial with Headspace's full library of meditations that you can use in any situation. This is the best deal offered by Headspace right now. So if you're interested, go to headspace.com/special offer to get 1 free 1-month trial with Headspace's full library of meditations. I'd like to announce that there's an event that some of you may find very useful. This is an event put on by Logitech that I will be speaking at. It's called Rethink Education, the Biology of Learning, Reimagining Learning Through Neuroscience. And at this event, I will be speaking. There will be other speakers as well. And I will be talking about neuroplasticity and its applications for teaching and for learning. I will describe what I call the plasticity super protocol that incorporates all of what we know about rapid learning, efficient learning, and the best ways to teach and learn. It's geared towards educators of all kinds. It is zero cost, so please feel free to sign up. The event is September 30th, 2021 at 3 p.m. Eastern. You can find the registration link in the caption for this episode. So let's talk about dopamine. Most people have heard of dopamine, and we hear all the time now about dopamine hits. But actually, there's no such thing as a dopamine hit. And actually, the way that your body uses dopamine is to have a baseline level of dopamine, meaning an amount of dopamine that's circulating in your brain and body all the time. And that turns out to be important for how you feel generally, whether or not you're in a good mood, motivated, etc. And you also can experience peaks in dopamine above baseline. Now, this has a very specific name in the neurobiology literature, so-called tonic and phasic release of dopamine. And I'll explain what that means in a couple of minutes. But if you remember nothing else from this episode, please remember this, that when you experience something or you crave something really desirable, really exciting to you, very pleasurable, what happens afterwards is your baseline level of dopamine drops. Okay, so these peaks in dopamine, they influence how much dopamine will generally be circulating afterward. And you might think, oh, a big peak in dopamine. After that, I'm going to feel even better because I just had this great event. Not the case. What actually happens is that your baseline level of dopamine drops. And I will explain the precise mechanism for that. Okay, in the neuroscience literature, we refer to this as tonic and phasic release of dopamine. Tonic being the low level baseline that's always there circulating, released into your brain all the time. And then phasic, these peaks that ride above that baseline. And those two things interact. And this is really important. I'm going to teach you the underlying neurobiology, but even if you have no background in biology, I promise to make it all clear. I'll explain the terms and what they mean. And I'm excited to teach you about dopamine because dopamine has everything to do with how you feel right now as you're listening to this. It has everything to do with how you will feel an hour from now. It has everything to do with your level of motivation and your level of desire and your willingness to push through effort. If ever you've interacted with somebody who just doesn't seem to have any drive, they've given up, or if you've interacted with somebody who seems to have endless drive and energy, what you are looking at there in those two circumstances is without question a difference in the level of dopamine circulating in their system. There will be other factors too, but the level of dopamine is the primary determinant of how motivated we are, how excited we are, how outward facing we are, and how willing we are to lean into life and pursue things. Dopamine is what we call a neuromodulator. Neuromodulators are different than neurotransmitters. Neurotransmitters are involved in the dialogue between neurons, nerve cells, and neurotransmitters tend to mediate local communication. Just imagine two people talking to one another at a concert. That communication between them is analogous to the communication carried out by neurotransmitters, whereas neuromodulators influence the communication of many neurons. Imagine a bunch of people dancing where it's a coordinated dance involving 10 or 20 or hundreds of people. Neuromodulators are coordinating that dance. In the nervous system, what this means is that
dopamine release changes the probability that certain neural circuits will be active and that other neural circuits will be inactive. Okay, so it modulates a bunch of things all at once. And that's why it's so powerful at shifting not just our levels of energy, but also our mindset, also our feelings of whether or not we can or cannot accomplish something. So how does dopamine work and what does it do? Well, first of all, it is not just responsible for pleasure. It is responsible for motivation and drive, primarily at the psychological level. Also for craving. Those three things are sort of the same: motivation, drive, and craving. It also controls time perception. And we will get deep into how dopamine can modulate time perception and how important it is that everybody be able to access increases in dopamine at different time scales. This turns out to be important to not end up addicted to substances, but it also turns out to be very important to sustain effort and be a happy person over long periods of time, which I think most everybody wants. It certainly is adaptive in life to be able to do that. Dopamine is also vitally important for movement. I'll explain the neural circuits for dopamine and mindset and dopamine in movement in a moment, but in diseases like Parkinson's or Lewy body's dementia, which is similar to Parkinson's in many ways, there's a depletion or death of dopamine neurons at a particular location in the brain, which leads to shaky movements, challenges in speaking, challenges in particular in initiating movement, and because dopamine is depleted elsewhere too, people with Parkinson's and Lewy body dementia also experience drops in motivation and affect, meaning mood. They tend to get depressed and so on. When those people are properly treated, they can, not always, but they can recover some fluidity of movement, some ability to initiate movement, and almost without question, those people feel better psychologically, not just because they can move, but also because dopamine impacts mood and motivation. So what are the underlying neural circuits? For those of you that are not interested in biology and specific nomenclature, you can tune out now if you want, but it's actually pretty straightforward. You have two main neural circuits in the brain that dopamine uses in order to exert all its effects. The first one is a pathway that goes from this area in the what's called the ventral tegmentum. That's fancy, but ventral just means bottom, and tegmentum actually means floor. So it's at the bottom of the brain, and it's the ventral part of the floor, so it's really low in the back of the brain, the ventral tegmentum, and it goes from the ventral tegmentum to what's called the ventral striatum and the prefrontal cortex. Now that's a lot of language, but basically what we call this is the mesocorticolimbic pathway. This is the pathway by which dopamine influences motivation, drive, and craving. It involves structures that some of you may have heard of before, things like nucleus accumbens and the prefrontal cortex. This is the pathway that really gets disrupted in addictions, where in particular, drugs that influence the release of dopamine, like cocaine and methamphetamine, we'll talk about those drugs today, they tap into this pathway. But if you are pursuing a partner, a boyfriend or girlfriend, if you're pursuing a degree in school, if you're pursuing a finish line in a race, you are tapping into this so-called mesocorticolimbic pathway. This is the classic reward pathway in all mammals. The other pathway emerges from an area in the brain called the substantia nigra, so called because the cells in that area are dark, and the substantia nigra connects to an area of the brain called the dorsal striatum. This is, not surprisingly, called the nigrostriatal pathway. For those of you who have never done any neuroanatomy, I'm going to teach you a little trick right now. Everything in neuroanatomy, the first part of a word tells you where the neurons are. And then the second part tells you where they are connecting to. So when I say nigrostriatal pathway, it means that the neurons are in the substantia nigra and they connect to the striatum, nigrostriatal pathway. So while it's a lot of language, there is some logic there. Okay, so we got these two pathways, one mainly for movement, right? This is the substantia nigra to dorsal striatum. And we've got this other pathway, the so-called mesocorticolimbic pathway, that's for reward, reinforcement, and motivation. I want you to remember that there are two pathways. If you don't remember the two pathways in detail, that's fine. But please remember that there are two pathways because that turns out to be important later. Now, the other thing to understand about dopamine is that the way that dopamine is released in the brain and body can differ.
meaning it can be very local or it can be more broad. Now, most of you have probably heard of synapses. Synapses are the little spaces between neurons, and basically neurons, nerve cells, communicate with one another by making each other electrically active or by making each other less electrically active. So here's how this works. You can imagine one nerve cell and another nerve cell with a little gap between them, a little synapse. And the way that one nerve cell causes the next nerve cell to fire, what we call fire really means to become electrically active, is that it vomits out these little packets, what we call vesicles. They're little bubbles filled with a chemical. When that chemical enters the synapse, some of it docks or parks on the other side in the other neuron. And by virtue of electrical changes in what we call the postsynaptic neuron, that chemical will make that neuron more electrically active or less electrically active. Dopamine can do that like any other neurotransmitter or neuromodulator. So it can have one neuron influence another neuron, but dopamine can also engage in what's called volumetric release. Volumetric release is like a giant vomit that gets out to 50 or 100 or even thousands of cells. So there's local release, what we call synaptic release, and then there's volumetric release. So volumetric release is like dumping all this dopamine out into the system. So dopamine is incredible because it can change the way that our neural circuits work at a local scale and at a very broad scale. And for those of you that are only interested in tools, like how do I get more dopamine? Let me tell you, this part is really important because if you were to take a drug or supplement that increases your level of dopamine, you are influencing both the local release of dopamine and volumetric release. This relates back to the baseline of dopamine and the big peak above baseline. And that turns out to be important. And I'll just allude to why it's important. Many drugs, and indeed many supplements that increase dopamine, will actually make it harder for you to sustain dopamine release over long periods of time and to achieve those peaks that most of us are craving when we are in pursuit of things. Why? Because if you get both volumetric release, the dumping out of dopamine everywhere, and you're getting local release, what it means is that the difference between the peak and baseline is likely to be smaller. And this is very important, how satisfying or exciting or pleasurable a given experience is doesn't just depend on the height of that peak. It depends on the height of that peak relative to the baseline. So if you increase the baseline and you increase the peak, you're not going to achieve more and more pleasure from things. I'll talk about how to leverage this information in a little bit, but just increasing your dopamine, yes, it will make you excited for all things. It will make you feel very motivated, but it will also make that motivation very short-lived. So there's a better way to increase your dopamine. There's a better way to optimize this peak to baseline ratio. For now, what we've talked about is two main neural circuits, one for movement and one for motivation and craving with dopamine. And we've talked about two main modes of communication between neurons with dopamine. One is this local synaptic release. One is more volumetric release. And in the back of your mind, you can relate this back to, again, this baseline versus peaks above baseline. So that's a description of what we would call the spatial effects or the spatial aspects of dopamine. I said this connects to that connects to this. You can get local or more broad volumetric release. What about the duration of release or the duration of action for dopamine? Well, dopamine is unique among chemicals in the brain because dopamine, unlike a lot of chemicals in the brain, works through what are called G protein coupled receptors. And for those of you that are about to pass out from the amount of detail, just hang in there with me. It's really not complicated. There are two ways that neurons can communicate, or mainly two ways. There are a third and a fourth, but mostly neurons communicate by two modes. One are what we call fast electrical synapses, ionotropic conduction. All right, you don't need to know what that means, but basically one neuron